Hey friends, so we were going through our exercise 2.2 and we have solved two examples already, okay, and I have given you to solve two examples two by yourself, okay. So now we will, in this lecture we will see more to example, that is 3 and 4, okay. So third example is saying us that the base of the isosceles triangle, is 4 upon 3 centimeter. Okay, now what is isosceles triangle? Isosceles triangle means any triangle which has two sides equal. Okay, any triangle who has two sides equal, मतलब कोई भी triangle हो जिसकी दो sides equal, उसको हम क्या कहते हैं? Isosceles triangle. The perimeter is 4 and 2 upon 15. Now what is perimeter is? Perimeter is sum of length of all three sides of that triangle. Perimeter is the sum of length of all those three sides of that triangle. जो ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड का जो सम है, जो एडिशन है, उसको हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर. जो पेरीमीटर हमें दिया गया है वो कितना है? 4 and 2 upon 15 सेंटीमीटर. What is the length of either of two remaining equal sides? जो बेस है उसकी लेंथ है 4 upon 3 सेंटीमीटर. हमें पेरीमीटर दिया गया है, तो बाकी की जो रिमेनिंग इक्वल साइड्स है उसकी लेंथ क्या होगी? That has been asked us to find out. Suppose I draw a triangle over here, that is isosceles triangle. Okay, suppose I draw a isosceles triangle. Okay, in base is given to us. The base of isosceles triangle is 4 upon 3 centimeter. This is the base. In base is the length of base is 4 upon 3 centimeter. Okay, 4 upon 3 centimeter. Suppose I am giving a name to this triangle is triangle ABC. So BC is given to us. The length of BC is 4 upon 3 centimeter. Okay. Now this is an isosceles triangle. Okay. So remaining two sides, the length of remaining two sides will be equal. Okay. Suppose this is a 3 centimeter. So this is also a 3 centimeter. Suppose this is a 4 centimeter, then this will also a 4 centimeter. The length of both these sides are equal. Why? Because this is a isosceles triangle, and always that if there is a isosceles triangle, तो उस triangle की दो साइड हमेशा equally होगी. तो अगर मैं if this is the length of AB is 7 centimeter, then AC is also 7 centimeter. Okay. The perimeter is 4 and 2 upon 15. Now what is perimeter is? Perimeter is sum of length of all these three sides. Sum of length of all these three sides means AB plus BC plus CA. इन तीनों साइड का जो अगर मैं एडिशन करूं, इन तीनों साइड के लेंथ का if I do a addition, then I will get 4 and 2 upon 50. 4 and 2 upon 50. This is a perimeter. So what has been asked to us is what is the length of either of two remaining equal sides. बाकी की जो remaining equal sides है उसकी length क्या होगी? It means we have been asked to find out the length of AB and AC. हमें AB और AC की length find out करने के लिए कहा गया है. Okay. Now what is the what ingredients has been given to us? मुझे क्या क्या दिया गया है? तो मुझे एक बेस दिया गया है, एक साइड की वैल्यू दी गई है जिस that is 4 upon 3. मुझे पेरीमीटर दिया गया है, means addition of AB plus BC plus CA has been given to me now. And मुझे AB and AC find out करने के लिए कहा गया है. Okay. So suppose the length of AB is x. So what would be the length of AC? Suppose I assume the length of AB is x centimeter, so AC would be also x centimeter. Why? Because both these sides are equal. अगर ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7, अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4, अगर ये 3 तो ये भी 3, तो अगर ये x तो ये भी x. Okay, this is how we will assume the variable x over here. Okay, so suppose I write, suppose AB is equal to x centimeter, and what is given to us? BC is already given to us. Okay,
suppose AB is x centimeter, so AC is equal to x centimeter also, because AB and AC both are very same. Okay, so AB is x centimeter, so AC also x centimeter, and BC is given to you. BC तो हमें पहले से दिया गया है, जो कितना है 4/3 centimeter. Okay, 4/3 centimeter. And now one more thing is given to us, that is perimeter. So if I do the addition of all these three length, AB plus BC plus CA, अगर मैं इन तीनों लेंथ का एडिशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा? पेरीमीटर मिलेगा. This is how I can, using this formula, I can find out the value of perimeter. But the thing is, here already perimeter is given to you. Here already perimeter has been given to you, so you can directly put the value of perimeter over here. Okay, 4n2 upon 15. That is already has been given to you. Now what you have assumed the value of AB. आपने AB क्या assume किया हुआ? आपने AB assume किया हुआ x. So you can put the value of x in the place of AB. Now what you have assumed the BC. BC क्या assume किया हुआ है? BC हमने assume नहीं किया, लेकिन BC हमने हमें दिया गया है, जो कितना है 4/3. 4/3. Now what is CA? CA is x centimeter. Now CA and AC both are very same. You can represent the side in both way. You can say this BC or you can say also CB. You can say AC or you can say CA. This is AB or you can say BA also. So AC is x centimeter, जो हमने assume किया था. फिर से मैं बोल देता हूँ, AB जो हमने assume किया था x, AC BC हमें दिया गया 4/3, and CA जो हमने assume किया था x. आप उसको AC भी कह सकते हो, CA भी कह सकते हो, आप जो चाहे उसको कह सकते हो. We can represent the length in a both way, AC or you can say CA also, BC or CB, AB or BA. Okay, so is equal to, can I write this mixed fraction in a simple fraction form? Right, like how? 15 4 16. अगर ये मिक्स फॉर्म में है तो मैं उसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? मुझे क्या करना होता है, ये 4 और 15 का मल्टीप्लिकेशन करना होता है. इट इज अ वेरी इजी. आई थिंक ऑल ऑफ यू माइट बी अवेयर विद दिस, हाउ टू सिंप्लीफाई दिस. 15 4 16, and whatever you answer got after multiplying, you will have to add, that has been given to you in a numerator. So 15 4 60 plus 2 62. You will write 62 over here, divide by 15. Okay, जो भी हमें दिया गया वही के वही 15 हमें हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे. Okay, so now I will bring together the similar type of numbers, variable and all. So I can directly add x plus x. X plus x. How many x? 2x. This is 1x. This is also 1x. So x plus x will be 2x. 2x plus 4/3 is equal to 62 divided by 15. 62 divided by 15. Okay. So I have written 2x as it is. I have written 62 divided by 15 as it is, and I am going to take this 4/3 into the right side of this is equal to, so this 4/3 will be minus. Okay, so 2x is equal to, now can you find out the LCM of 15 and 3, and then after you will bring the same denominator. Okay, so what will happen, now here already 15 is here. Okay, so I will try to bring 15 here also. So मैं क्या करूँगा, 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे यहाँ पर 15 मिल जाएगा. तो आप इस तरह से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो. There is one more way to find out the value of this sum. That is, you can directly multiply the denominator. 15 3s are, that is 45. Okay, whichever method you feel easy, you can go through that method. Okay, आपको जो भी मेथड कंफर्टेबल लगे, अच्छे लगे, उस मेथड से आप जा सकते हो. पहले हमने सीखा था कि अगर हमारे पास
62 upon 15 minus 4 upon 3 इस तरह का कोई भी सम है तो वी विल फाइंड आउट द एलसीएम। एलसीएम मिलने के बाद जो भी हमें एलसीएम मिलता है वो हम डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश करते हैं। ओके, आप उस मेथड से भी जा सकते हो। राइट नाउ आई एम अप्लाइंग वन मोर मेथड टू फाइंड आउट द आंसर। इन द बोथ वे यू विल गेट द सेम आंसर। तो आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो। ओके, 15 3s are 45. Now I will have to do cross multiplication. 62 3s would be 186 minus cross multiplication 15 4s would be 60. So 186 minus 60. 186 minus 60 is 6 to 1. 186 divided by 45. Okay, so I got 2x is equal to 126 divided by 45. Okay, so x is equal to suppose I write 2x is equal to, or suppose I do not want to write 126 45 over here, I can directly write 2x is equal to 126 minus 60, so it is 126 divided by 45. Okay, so what will happen now? 2x, you can see 2x is relation of 2 and x is a multiplication, so this 2 will go in the denominator. Why? Because this is associated with the relation of multiplication, तो कहाँ चला जाएगा? डिवीजन में. So x is equal to 126 divided by 45 और ये 2 भी इसके साथ आ जाएगी. ओके, क्योंकि ये कहाँ था? मल्टीप्लिकेशन में था, तो कहाँ चला गया? डिवीजन में आ गया. दिस इज अ रूल दैट वी नो वेरी वेल, हम अच्छे से उसको जानते हैं. नाउ आई एम ट्राइंग टू डू द सिंप्लीफाई दिस फॉर्म. 126 divided by 42 multiplied by 2. Now I am going to cut the numbers. Suppose I am going to cut 45 by 3. Okay, suppose I cut 45 by 3, I will get 15. And suppose I cut 126 by 3, so you will get 42. Okay, now 2 21s are 42, so you get 21 divided by 15. You can do more, simplify this. 3 5s are 15 and 3 7s are 21. So you got the final answer would be 7 upon 5. So you got the value of x is 7 upon 5. आपको x की वैल्यू कितनी मिली है? 7 upon 5. ओके, आपको x की वैल्यू मिली है 7 upon 5. मैं फिर से बोलता हूँ, आपको करना है 126 divided by 45 और ये 2 चले जाएंगे यहाँ पर. फिर मैंने 45 को 3 से कट किया तो मुझे मिला 15. सेम थिंग आई हैव डन इन न्यूमरेटर, तो मुझे मिला 42. 42 3s are 126 and 15 3s are 45. फिर मैंने 42 को 2 से कट कर लिया तो 2 21s are 42. फिर 21 was here and 15 was here, so both number I have cut by number 3. So 7 3s are 21 and 5 3s are 15. So I got the value of x is 7 upon 5. तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिली? 7 upon 5. तो मैंने x क्या एज्यूम किया होता? मैंने x एज्यूम किया होता ab, तो मुझे AB कितना मिलेगा? AB is also 7 upon 5 and AC is also 7 upon 5. AB is also 7 upon 5 and AC is also 7 upon 5. That is what we have been asked to find out. That is what we have been asked to find out. ये हमें पूछा गया था फाइंड आउट करने के लिए कि बाकी की जो लेंथ है उसकी वैल्यू क्या होगी. तो क्या होगी? इसकी भी 7 upon 5 और इसकी लेंथ भी 7 upon 5. Now I do not have much space over here, so I am just writing over here. But you will have to write just below to this step. आपको इसके नीचे ही लिखना है. ओके, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन आपको इसके नीचे ही लिखना है. ओके, क्या लिखोगे आप इसके नीचे? आपको लिखना है AB is equal to x. So x की वैल्यू कितनी हमें मिली? 7 upon 5. And AC was also x is equal to 7 upon 5 centimeter and centimeter. So the length of two remaining equal sides are 7 upon 5 and 7 upon 5 centimeter. Okay, this is how we can solve the examples like that.
इसकी जगह पर आपको मैं और एग्जांपल दे सकता हूँ, उसकी जगह पर वैल्यू चेंज करके द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज, इसकी जगह पर 4/3 आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ एनीथिंग लाइक 7/2 और 12/5, okay, in the place of base. And the perimeter I can give you, here perimeter is 4 and 2/15. I can give you some more something else, some else perimeter, that is 9/3/16 or whatever. And what is the length of either two remaining equal sides. तो आपको सेम मेथड फॉलो करना है. आपको बेस की जगह पर जो दिया जाएगा वो आप लिखोगे यहाँ पर, पेरीमीटर की जगह पर जो दूसरी वैल्यू आपको दी जाएगी वो आप लिखोगे, एंड यहाँ पर सेम आप x एज्यूम करोगे और पूरा सम इस तरह से सॉल्व करोगे. ओके, नाउ फोर्थ सम इज सम ऑफ टू नंबर इज 95. सम ऑफ टू नंबर इज 95, यानी दो नंबर है जिसका एडिशन, जिसका सम कितना है, यानी टोटल कितना है उन दो नंबर का 95. ओके, नाउ इफ वन exceeds by other 15, जो पहला नंबर है या कोई भी एक नंबर है वो दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है, exceeds by other 15, जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है. ओके, सपोज कि मैं कहूं पहला नंबर है 20, तो दूसरा नंबर क्या होगा 20 plus 15 35. सपोज वन नंबर इज 30, तो सेकंड नंबर वुड बी 30 plus 15 45. ओके, सपोज फर्स्ट नंबर इज 10, so second number would be 10 plus 15, again 10 plus 15 would be 25. Okay, so suppose first number is x, so second number would be x plus 15. Okay, suppose I am going to assume, suppose one number is x, so second number is x plus 15. ओके, अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर कैसा होगा, x plus 15, क्योंकि अगर पहला नंबर सपोज कि पहला नंबर 50 है 50, तो दूसरा नंबर क्या होगा 50 plus 15. Okay, suppose one number is 60, so second number would be 60 plus 15. So suppose first number is x, so second number would be x plus 15. इस तरह से आपको assume करना है. सबसे main thing है कि we need to understand how to assume the variable as well as how to frame the equation. If you will read the instruction that has been given to you very carefully, okay, very carefully, and keeping your mind so concentrated, okay, if you will pay the 100% attention to the question or the sentences has been written in the board, you will easily determine or you will easily able to make the equation as well as you will able to assume the variable, कि आपको क्या वेरिएबल किसकी लेंथ में किसकी वैल्यू पे क्या एज्यूम करना है वो आप इजीली फाइंड आउट करना है. इसके पहले आपको अच्छे से पूरे सम को अच्छे से पढ़ना है. ओके, जैसे मैंने अच्छे से यहाँ पर पढ़ा कि 2 नंबर का सम 95 है, उसमें जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है. सपोज कि पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर कितना होगा x plus 15. नाउ इन्हीं दो नंबर का x का और x plus 15 का, ये दो नंबर है, इन्हीं दो नंबर का सम कितना है 95. इन्हीं दो नंबर का फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो नंबर का, सपोज कि फर्स्ट ये पहला नंबर और ये सेकंड नंबर इज x plus 15. इन्हीं दो नंबर का सम कितना है 95. This is how you can frame the equation. So x plus x would be 2x plus 15 is equal to 95. Okay, now I have written 2x as it is, 95 as it is. This 15 will go to the right side, so it will become minus 15. So 2x is equal to 95 minus 15 is equal to 80. If I subtract 15 from 95, I will get 80. So 2x is equal to 80 divided by 2. So 80 divided by 2 would be
x is equal to 40. X is equal to 40. So first number would be 40 and second number would be x plus 50, means 40 plus 15, that is 55. Okay, we can write first number is x is equal to 40 and second number was x plus 15. Second number is x plus 15. So x की in the place of x I can write 40, क्योंकि मुझे x कितना मिला है, 40 मिला है, तो in the place of x I can write 40 plus 15. So 40 plus 15 is equal to 55. So now you can verify that is your answer correct or not. How you can add both this number 40 plus 55. Are you getting 95 or not? Yes, we are getting 95. 40 plus 55 is a 90. Okay, so this is how you can solve the example. Here I can change the values. In the place of 95 I can put some other value, and in the place of 15 I can put some other value. So same method you will apply if the value is changed but instruction is the same, very same. Okay, तो आपको इस तरह से solve करना है. Okay, so you write down both this example in a very well manner and learn it, and the based on this type of example I will ask some more 2 example to solve by yourselves. Okay, तो आप इसको अच्छे से लिख दो और अच्छे से समझ के मुझे सेंड कर देना, भूलना नहीं. Okay, thank you.